Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we will discuss the second category of requirement elicitation classification, which is the contextual techniques. इस कैटेगरी के अंदर कुछ elicitation techniques हम आज डिस्कस करेंगे। उन elicitation techniques के अंदर observation, ethnography and protocol analysis. These are three elicitation techniques lies in the contextual techniques category. Contextual techniques होती क्या है? These are the techniques that collect requirements in context of the user. जो आपका स्टेक होल्डर है, जो यूजर है, वो जिस एनवायरनमेंट के अंदर अपने डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रहा है, तो उसमें उस यूजर्स के कॉन्टेक्स्ट को, उस यूजर की एनवायरनमेंट को, उस यूजर की सराउंडिंग्स को कैप्चर करना, उसको अंडरस्टैंड करना, उसको एलिसिट करना इस कैटेगरी का काम है। So these techniques are used to collect requirements in the context of users and therefore collect requirements at the workplace of the end users. So the requirements are gathered at the working environment where the system will later be used. So I have already told that the techniques in this category are observation, ethnography and protocol analysis. Now let's discuss the first one, which is the observation. Observation is also called the social analysis. इसका एक और नाम भी है social analysis. अब इस टेक्निक के अंदर रिक्वायरमेंट इंजीनियर क्या एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं और क्या उनका पर्पस होता है? द रिक्वायरमेंट इंजीनियर और रिक्वायरमेंट एनालिस्ट ऑब्जर्व्स द यूजर्स एनवायरनमेंट without interfering in their work. And this technique is used when customer is not able to explain what they want to see in the system. इस तरह के हमारे पास बहुत सारे ऐसे सिस्टम आ जाते हैं जिसमें जो यूज़र होता है, जो एक्चुअल यूज़र होता है, उसको बहुत या तो पिक्चर बिल्कुल ही क्लियर नहीं होती या बहुत माइनर सी उनको अंडरस्टैंडिंग होती है कि उनको कैसा एक सिस्टम चाहिए। तो जब ऐसी सिचुएशन हो तो फिर रिक्वायरमेंट इंजीनियर या रिक्वायरमेंट एनालिस्ट फिर वो ये टेक्निक्स यूज़ करते हैं ताकि उनके सिस्टम को, उनकी वर्किंग को, उनके फ्लो को, उनके डिफरेंट टास्क को ये अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सके, उसको एनालाइज कर सके। सो रिक्वायरमेंट इंजीनियर विजिट्स एंड नोटिस द कस्टमर्स वर्क प्लेस वेयर द सिस्टम सर्विसेज आर टू बी प्रोवाइडेड। इसमें रिक्वायरमेंट इंजीनियर को एक बात का ख्याल रखना होता है कि द डाटा विच इज़ टू बी कलेक्टेड ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन प्रोसेस, ड्यूरिंग आई मीन टू से कि जब वो ऑब्जर्वेशन कर रहा होता है तो उस वक़्त उसने कुछ डाटा कलेक्ट करना होता है। तो वो कौन सा डाटा कलेक्ट करना है, कौन सा डाटा कलेक्ट नहीं करना, ये प्री डिफाइंड डिसाइड होना चाहिए ताकि इसके अंदर कोई कंफ्यूजन ना रहे कि किसको स्किप करना है और किसको रिकॉर्ड करना है। सो secondly, there are two type of observation. One is the passive observation and the second one is the active observation. Passive observation में क्या होता है कि जब analyst does not interact with the user while he is observing the environment, this is called the passive observation, जैसा कि नाम से भी जाहिर है। और active observation में ये होता है कि जो एनालिस्ट है he or she can interrupt the user for the purpose of questioning during observation. अब ऑब्जर्वेशन के दौरान उन एनालिस्ट के जहन में कोई बात आती है, कोई क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए वो किसी भी यूज़र को इंटरप्ट कर सकता है और उससे वो क्वेश्चन पूछ सकता है। दिस इज द एक्टिव ऑब्जर्वेशन।
and the passive observation is in which the user does not interrupt. These are the advantages of this technique. The first advantage is the data collected in this technique is authentic and reliable, because analyst by himself goes to observe the environment. The second advantage is can be useful to confirm and validate requirements collected through other methods. आपने दूसरी टेक्निक्स के ज़रिए से कुछ डाटा आपने कलेक्ट किया है, रिक्वायरमेंट्स को कैप्चर किया है, तो this technique can also be used to confirm and validate those requirement, whether जो requirements आपने capture की हैं by using other techniques, वो data आपका valid है या वो वही data है जो हम user से लेना चाह रहे थे. The third one, it is inexpensive method, and the last one is it is helpful in work measurement, that is how long particular task takes to be done. Or there are some disadvantages associated with this technique. The first one is all the requirements cannot be checked in just a single session. ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप एक सिंगल सेशन कंडक्ट करें और उस सिंगल सेशन के अंदर आप तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरी तरह ग्रिप कर लें, पूरी तरह कैप्चर कर लें. इसमें बहुत सारे सेशंस आई हैं. दैट इज व्हाई वी कैन से दैट इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग मेथड एंड टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी. सेकंड वन इज डिसएडवांटेज इज कि जब पैसिव ऑब्जर्वेशन होती है, इन पैसिव ऑब्जर्वेशन इट इज डिफिकल्ट फॉर एनालिस्ट टू मेक आउट व्हाई सम डिसीजंस आर मेड. जब आपने पैसिव ऑब्जर्वेशन, जैसा कि मैंने अभी बताया कि उसके अंदर जो एनालिस्ट है, ही और शी कैन नॉट इंटरेक्ट विद द एक्चुअल यूजर. जब उसकी इंटरेक्शन नहीं होगी तो और उसके जहन में कोई इबहाम रह गया, कोई क्वेश्चन आ गया, then how that question should be solved. So there is a chance of ambiguity and there is a difficulty for analyst or requirement engineer. So the second technique in this category is the ethnography. And as you know that this technique is also related with the context of the user, and in this technique analyst observes the activities of people from different communities for a period of time in detail, and in the meanwhile collect requirements needed. So we can say that it is kind of you can say that it is kind of field work done in order to observe a particular place and actors and the relationship between them. So ये एथनोग्राफी जो है, ये ऐसी टेक्निक है जिसमें हम एक स्टडी करते हैं, और स्टडी करने का मकसद ये होता है कि हम जो रिक्वायरमेंट्स कैप्चर करें वो ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव और ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट और कंसाइज हो. तो इस टेक्निक के अंदर हम ये करते हैं कि एक वर्क प्लेस के ऊपर जितने भी लोग हैं उनको स्टडी करना, वर्क प्लेस को, एनवायरनमेंट को स्टडी करना, और इनके दरमियान इन क्या रिलेशनशिप है उसको स्टडी करना इस टेक्निक की रेस्पॉन्सिबिलिटी है. So this technique is used in combination with other elicitation techniques like interviews and questionnaires. Exactly this technique is far better अगर आप इस टेक्निक में जब आप लोगों को, जब उनकी वर्क प्लेस को, जब उनके दरमियान एक रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, तो डेफिनेटली देयर अराइज सम क्वेश्चंस इन द माइंड ऑफ एनालिस्ट और रिक्वायरमेंट इंजीनियर, और उन क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए
sometimes it is necessary to conduct interviews, it is necessary to conduct questionnaire or surveys, so for effective requirement elicitation. So this technique is far better if we use this technique in combination with other elicitation techniques like interviews and questionnaires. So these are some of the advantages of these techniques. First one is it helps to discover certain features of a workplace in a shorter time period. And the second advantage is it helps to understand how people work in an organization and how they interact with each other. So इसमें आपको ऑर्गेनाइजेशंस के ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, उसके अंदर डिफरेंट जो जो लोग काम कर रहे होते हैं उनका इंटरेक्शन स्टाइल्स, इंटरेक्शन मैकेनिज्म, ईच एंड एवरीथिंग आप इसके अंदर स्टडी जो है इसके एडवांटेजेस हैं कि आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। इसका एक एडवांटेज ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज जो हैं उसकी जो है वो इतने इफेक्टिव नहीं होते। इट आल्सो हेल्प्स रिवील क्रिटिकल इवेंट्स नॉट ऑब्जर्व्ड बाय एनी अदर टेक्निक्स। जब लाइक फॉर एग्जांपल जो यूज़र जेस्चर इंटरेक्शन होती है वो आप इस टेक्निक के अंदर उसको एलिसिट कर सकते हैं। जब लोग आपस में बात करते हैं तो उनके फिजिकल एक्सप्रेशंस, उनकी बॉडी मूवमेंट एंड जो उनके डिफरेंट जेस्चर्स हैं तो एनालिस्ट उनको अंडरस्टैंड करता है, जो कि शायद इंटरव्यूज, क्वेश्चनियर्स, प्रोटोटाइपिंग एंड मैनी अदर different elicitation techniques cannot do that. And it is also used in validating requirements. The advantages associated with this technique is in fact the problem is that there is no detailed guidelines on how to perform ethnographic technique effectively. आपके पास इस टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस नहीं है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पर्सनल स्किल्स ऑफ द पर्सन, ऑफ द एनालिस्ट, ऑफ द रिक्वायरमेंट इंजीनियर कि वो इसको कैसे परफॉर्म कर रहा है, कितना बेहतर परफॉर्म कर रहा है। सो देयर इज अ रिस्क फैक्टर है। Second disadvantage is it requires engineers to have a lot of experience to perform it. जैसा कि ऊपर वाला disadvantage यही कह रहा है कि इसके अंदर क्योंकि स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन नहीं है तो जो भी इस टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए एनालिस्ट आप चूज करें तो वो बड़ा वेल नोन एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए। The next disadvantage is it's a new and unique feature added to the system might not be discovered. It also focuses mainly on the end user, their interaction and their workplace. तो इसके अंदर शायद जो दूसरे एस्पेक्ट्स होते हैं लाइक जो सिस्टम ओरिएंटेड होते हैं वो इसके अंदर इतने ज़्यादा फोकस नहीं किए जाते। और जैसा कि पहले कहा कि इस एक्टिविटी को एक सेशन में आप कंडक्ट करें तो आप रिक्वायरमेंट्स को प्रॉपरली या इफ़ेक्टिवली एलिसिट नहीं कर सकते, इसको बहुत दफ़ा इसको रिपीट करना पड़ता है। दैट इज़ वाई इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी। And the different backgrounds of users and ethnographers can result in misunderstanding problem between them. This is also one of the disadvantages कि अगर एक ही environment को दो analyst जो है वो उसके ऊपर ethnography technique apply करते हैं तो दोनों analyst का exposure, experience और उनकी बैकग्राउंड डिफरेंट होने की वजह से इट इज़ पॉसिबल कि दोनों जो भी रिक्वायरमेंट्स कैप्चर करें, एलिसिट करें, वो दोनों के दरमियान जो ओवरलैपिंग एरिया है, जो कॉमन रिक्वायरमेंट्स हैं वो शायद बहुत ज़्यादा ना हो। सो दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस एसोसिएटेड विद दिस टेक्निक। Now let's come to the next category which is the collaborative or group technique category. And
This category, group elicitation techniques, involves teams or group of stakeholders who are applying their individual expertise on a particular issue, agree upon a set of decisions. So it involves people from different fields given equal powers to give their opinions regarding a particular system. अब इस टेक्निक के अंदर, इस कैटेगरी के अंदर, जो कि कोलैबोरेटिव या इसका दूसरा नाम ग्रुप टेक्निक्स है, इस कैटेगरी के अंदर डिफरेंट एलिसिटेशन टेक्निक्स हैं। वो एलिसिटेशन टेक्निक्स कौन सी हैं? एक प्रोटोटाइपिंग है, जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, एंड सो ऑन। सो इन सारी एलिसिटेशन टेक्निक्स के अंदर फिलॉसफी यही है कि इसमें डिफरेंट group of stakeholders या teams, they sit together on a particular issue and agree upon a set of decisions. So this is the now let's discuss the first one, which is the prototyping. Prototyping is a requirement elicitation technique. It's an iterative process in which you can say that the dummy version of the product is launched to obtain user requirement and is refined over and over again according to the user feedback. प्रोटोटाइपिंग में होता क्या है कि आप सबसे पहले यूज़र के साथ कुछ इंटरेक्ट करते हैं, और इंटरेक्शन करने के बाद आप उनका इंटरव्यू करते हैं या उनसे क्वेश्चनर्स लेते हैं, या आप डॉक्यूमेंट एनालिसिस करते हैं, या आप उनके एनवायरनमेंट को किसी हद तक ऑब्जर्व करते हैं। तो फिर आप एक स्केच बनाते हैं, एक प्रोटोटाइप बनाते हैं, और यूज़र से उसके मुतल्लिक़ आप फीडबैक लेते हैं कि आया कि ये जो क्या आप यही सिस्टम चाहते हैं, इससे कितना मिलता जुलता सिस्टम चाहते हैं। तो वो जो प्रोटोटाइप है उस पे यूज़र्स की फीडबैक आती है। फिर दोबारा जो एनालिस्ट, डेवलपर्स और डिज़ाइनर्स होते हैं, दे अगेन इम्प्रूव द प्रोटोटाइप, और फिर वो दोबारा यूजर्स के पास उस प्रोटोटाइप को भेजते हैं। सो दैट इज व्हाई इट इज एन आइटरेटिव प्रोसेस. Prototyping in fact is used for elicitation where the users have no knowledge about their requirement and where early response is required from stakeholders. सो आई थिंक जब जहाँ पर यूज़र्स को डोमेन की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, जहाँ पर यूज़र्स को सिस्टम की इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, और ये रिक्वायरमेंट होती है कि आपको स्टेक होल्डर से अर्ली रिस्पॉन्स लेना है, तो उसके लिए प्रोटोटाइपिंग टेक्निक यूज़ की जाती है. सो this technique is also used with the combination of different other elicitation techniques. इसके एडवांटेजेस क्या हैं? फर्स्ट एडवांटेज ये है कि इसमें यूज़र इन्वॉल्वमेंट होता है डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर. आपने एक स्केच बनाया, यूज़र से फीडबैक ली, फिर उसके अंदर इम्प्रूवमेंट की, फिर यूज़र से फीडबैक ली. सो इनफैक्ट इट is in this whole process user involvement is very good. User involvement is very positive. And the second advantage is it allows early user feedback for requirement refinement, and it saves development time and cost, and it the user and analyst get better understanding of the system. These are the some advantages. Now let's discuss the disadvantages associated with this technique. The first disadvantage is that when users get used to a particular kind of system, they often resist changes. So it's a very natural phenomena. The second disadvantage is the effort and cost estimation may get high as calculated earlier. Definitely आप एक अर्ली स्टेज के ऊपर जब आप
प्रोटोटाइपिंग करते हैं तो उसके साथ आप फिर उसका कॉस्ट और उसके साथ एफर्ट मेजर करते हैं, एस्टिमेट करते हैं। तो अर्ली स्टेजेस के ऊपर ऐसी जब आप एस्टिमेशंस करते हैं तो लेटर स्टेजेस के ऊपर उसमें वेरिएशंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। And for complex systems, for critical safety systems, it is the time consuming activity. Now let's discuss the second requirement elicitation technique of this category, which is the joint application development. And जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि joint application development sessions are basically a collaborative workshop that last for 4 to 5 days and whose outcome is a proper set of user requirement. So what are the advantages of this technique? It is, first one is it decrease time and cost of requirement elicitation. The second advantage is accelerates design of the system. आप जब कम टाइम के अंदर रिक्वायरमेंट्स को प्रॉपरली एलिसिट कर लेते हैं तो फिर आप के पास डिज़ाइन आगे नेक्स्ट स्टेप में डिज़ाइन सिस्टम का करने के लिए आप उसको एक्सेलरेट कर सकते हैं। सो आई मीन कि इसमें आपका टाइम और एफर्ट जो है इसका एडवांटेजेस हैं। इट प्रमोट्स यूज़र फीडबैक which is very good. It more user satisfaction इस टेक्निक के अंदर because it involves the because इसमें real users involve होते हैं, good communication between stakeholders, analysts and other professionals, and visual aids and case tools used to make the session interactive. जब 4-5 दिन कुछ लोग बैठ के एनालिस्ट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, इसमें यूजर, जिसमें डेवलपर्स, जिसमें इंजीनियर्स, सारे दे सिट टुगेदर फॉर 4 to 5 days, दे ट्राई टू कैप्चर द रिक्वायरमेंट्स, और उसके अंदर जब वो उनको डिफरेंट विजुअल एड्स और कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल्स की उनको ज़रूरत पड़ती है लाइक मल्टीमीडिया, तो these tools make the sessions interactive and help to understand the requirement more effectively. Okay, the advantages of this technique is if not properly planned can lead to wastage of time and resources. Exactly, अगर आपने इसको properly plan नहीं किया कि आपके आउटकम क्या होने हैं उस 4 to 5 days की एक सिटिंग के, और उसके अंदर आपके पास पूरा एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर नहीं है, तो डेफिनेटली उसमें जो आपने वो टाइम है और रिसोर्सेज है, इट्स अ वेस्टेज. इट्स रिक्वायर्स ट्रेन्ड फैसिलिटेटर्स एंड it requires lots of planning and effort, जैसा कि ऊपर कह चुके हैं, and it's an inexpensive activity. The third elicitation techniques in this category is the brainstorming. It's very important. वैसे तो अगर ये कहा जाए कि ये टेक्निक शायद तमाम टेक्निक के अंदर किसी हद तक यूज़ होती है कि जहाँ पर भी आपने रिक्वायरमेंट्स को एलिसिट करना है, कैप्चर करना है, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग तो वहाँ पे ज़रूरी है. आपने किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, एनालाइज करना है, तो डेफिनेटली एवरीवन विल यूज़ some sort of brainstorming. However, it's an informal, you can say that, discussion where free expression of ideas is given to every participant for a new kind of system to be developed. The main advantages of using brainstorming is that it encourages innovative ideas and expressions, and it promotes a generation of advanced and recent practices to current issues. So the advantages associated with
This technique costly very little and not much resources are needed. The second advantage is participant need not to be high qualified, and each participant takes part activity in the process, and it is comprehensible and easy to implement. It helps in new idea generation. जब आप brainstorming करते हैं तो definitely उसमें नया ideas भी जनरेट होते हैं, एंड ड्यूरिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग आप जितने को कॉन्फ्लिक्ट हैं उनको रिजॉल्व कर सकते हैं. Each participant is equally allowed to speak and share ideas. Now, the disadvantages of this technique that it is not suitable to resolve major issues, and if not organized properly can be time consuming. लाइक इसको इसी तरह आप यूँ समझ लें कि अगर आपके ऑब्जेक्टिव और आपका वो क्लियर नहीं है, आपका प्रॉब्लम क्लियर नहीं है कि आपने किस प्रॉब्लम के ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, तो इट्स टाइम कंज्यूमिंग. ऐसे हवा में तीर चलाने वाली बात है. क्वांटिटी ऑफ आइडियाज डज नॉट ऑलवेज इक्वल देयर क्वालिटी. So this is also one of the disadvantage, and it can lead to repetition of ideas if participants are not paying proper attention. The next disadvantage is some people, due to extrovert nature, may take over all the session and all the time sharing their ideas, and other people who are less outgoing will be afraid to take the time sharing their views. Okay, this is the next technique in this category is the group work, and in this technique stakeholders are invited to attend a meeting to elicit requirements for projects. It is somewhat similar to joint application development. You can say that it can be combined with interviews, document analysis, brainstorming, prototyping, etc. Although there are budget constraints with regard to money and time, but it is suitable for large and complex projects. So this is somehow the introduction and characteristics of this technique, which is group work. Now the advantages associated with this technique is it is used to collect requirements in a relatively shorter time, and it saves cost as compared to conducting interviews of same number of people. The disadvantages of this technique is it takes a lot of effort to bring all the stakeholders on the same table at the same time because of their busy schedule and political like aspects. So this is the advantage of this system. Disadvantage of this technique. The second one is participant may have issues related to trust and may feel hesitated to discuss critical or sensitive matters while they are sitting on at the same time on the same table. Another disadvantage is members may get influenced by dominant people in the meeting, leading to biased results. So इसमें हमारे पास जो requirements हैं उनकी validity के ऊपर question mark है. Now let's come to another elicitation technique of this category, which is the user scenarios. And user scenarios are the representation of users interaction with the system. It is a real world example how a system is used. जैसा कि आप लोग यूज केसेस से पूरी तरह वाकिफ हैं कि यूज केस किसी भी सिस्टम की एक कोर फंक्शनैलिटी को जाहिर करता है, तो
at some situations जो different writers हैं authors हैं they said that the scenarios and use cases are almost same thing. So user scenarios in fact is the representation of users interaction with the system, और use case model में भी आपने देखा होगा कि एक actor है वो different system के साथ interact करता है via different use cases के. So advantages of this technique is it is well developed scenarios helps organization to be proactive and work specially for the desired product. And the second advantage is it gives good clarification regarding an activity or event, its normal flow, exceptional behavior and alternate paths. जैसा कि आप use cases के अंदर भी आपने उसको जब डिस्क्राइब करते हैं यूज केस मॉडल को, तो उसके अंदर जब आप यूज केस लिखते हैं कि उसका जो आपके पास सक्सेसफुल फ्लो होता है किसी भी टास्क को कोर फंक्शनैलिटी को अचीव करने के लिए, तो उसको आप नरेट करते हैं. फिर उसका जो अल्टरनेट फ्लोज हो सकते हैं, जो उसके जो डिफरेंट फ्लोज, जो एक्सेप्शनल बिहेवियर हो सकता है, उसको भी आप उसके अंदर राइट अप करते हैं. तो दिस इज समहाउ सिमिलर. The next advantage is people with no technical knowledge can also understand it because it is used to only to understand the domain. इसमें सिर्फ आपने डोमेन अंडरस्टैंडिंग लेनी होती है, और इट्स अ वेरी सिंपल वे कि रियल वर्ल्ड के अंदर जो यूज़र एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो स्टेप्स करता है, उसी स्टेप्स का नाम सिनेरियोस है. और हर स्टेप के ऊपर कहाँ पे वो सिस्टम वो उसका एक्सेप्शनल बिहेवियर या अल्टरनेट फ्लो हो सकता है. सो दिस कैन आल्सो परफॉर्म बाय दोज पीपल हु हैव नो टेक्निकल नॉलेज. It is easy to understand as no special language is used to write them. This is also and it ensures system is designed properly as end user's perspective is considered for requirement elicitation. Disadvantage of this elicitation technique is it is difficult to draw useful scenarios. It is difficult to draw non-functional requirements. It is not suitable for all types of project even if they capture more requirement, and they do not cover all the processes. That is not the complete view of the future system. These are the disadvantages. The last category of this topic of this requirement elicitation is the cognitive techniques. अभी तक आपने इससे पीछे 3 डिफरेंट कैटेगरीज आपने स्टडी की हैं, और ये इस क्लासिफिकेशन की 4th कैटेगरी है. दिस इज द कॉग्निटिव टेक्निक. कॉग्निटिव टेक्निक में होता यूजुअली ये होता है कि आप यूजर्स की प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को आप डिस्कस कर रहे होते हैं. I mean these techniques allow analyzing and gathering information up to the human thinking level. So users problem solving approach, तो वो किसी प्रॉब्लम को किसी काम को परफॉर्म करने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाता है, क्या वो सोच रखता है. सो कॉग्निटिव टेक्निक्स आर यूज्ड to elicit stakeholders goal, values and attributes. So we can say that it is somehow an interviewing technique. Okay, there are different elicitation techniques in this category. The first one is lettering. As I said earlier just now, that it is an interviewing technique and whose purpose is to elicit different stakeholders goals, what they want, the values and attributes, and in fact it is an attempt to understand the user's problem solving approach. The
Advantages associated with this technique is it is easy to understand requirements because of hierarchical nature. Reuse of requirements save time and cost and not good for building a new system, क्योंकि उसके अंदर एक यूज़र किसी अगर सिस्टम को जानता नहीं है तो उसके मतलब उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की अप्रोच को अंडरस्टैंड करना मुश्किल होगा. सो दिस टेक्निक इज नॉट यूजफुल फॉर अ न्यू सिस्टम. Okay, the disadvantages associated with this technique is it is maintaining requirements is a difficult task while adding or deleting any user requirement anywhere in the hierarchy. And the second disadvantage associated with this technique is this technique becomes complex when requirements are in larger number and expert opinion or initial data is must to elicit a requirement. It is too long and tiring technique somehow in different situation. एक और बात जैसा कि इसमें कहा कि इसमें इस टेक्निक के लिए एक्सपर्ट ओपिनियन या इनिशियल डाटा जो है वो बहुत ज़रूरी है और तभी आप जो है वो अच्छे तरीके से इसके अंदर रिक्वायरमेंट एलिसिट कर सकते हैं. The second elicitation technique in cognitive category is card sorting, and it is a knowledge elicitation techniques in which stakeholders are asked to sort cards according to domain entity names using index cards or some software packages. Card sorting in fact provides अब यूँ कह लें कि card sorting in fact is used for in-depth understanding of the user's mental model. यूजर्स मेंटल मॉडल जिस तरह के हमने पिछली टेक्निक के अंदर बात की कि कॉग्निटिव टेक्निक्स जो होती हैं इनके अंदर हम क्या करते हैं यूजर्स प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को अंडरस्टैंड करना होता है, उसको कैप्चर करना होता है. सो इसके अंदर भी ये है कि यूजर्स का मेंटल मॉडल क्या है किसी भी टास्क को किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए, तो उसकी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग हम कार्ड सॉर्टिंग के ज़रिए करते हैं. It is fast and inexpensive, it is reliable and easy technique, and it help in providing a good under structure in-depth study provide करते हैं और qualitative data इसके अंदर gather होता है. It revolves real inputs from the users, and these are the advantages. Now let's see the disadvantages associated with this technique. It is not suitable for complex, large and heterogeneous architectures. It involves variable results and it useful when cards are limited in number. It includes only superficial characteristics and limited है ये technique. Interaction and in-depth explanations reduce the value of the technique.